And I cannot belittle God by talking God in the same breath that I talk about demons. God is a higher power. God uses demons to control things. God uses the angels to control things. And God uses humans and all the creatures on earth to control things. हेलो गाइस, वेलकम टू द हॉन्टेड शो. आई एम योर होस्ट श्लोक. आपने लास्ट टाइम बहुत सारे कमेंट्स डाले थे कि सावियो सर को लेके आओ, सावियो भाई को लेके आओ. सो हियर वी हैव मिस्टर सावियो फुर्टाडो विद अस अगेन टू एड्रेस ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज. एंड आज मैं उनको बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ जो आपने कमेंट्स में डाले हैं. आपके कुछ क्वेरीज़ है, कुछ डाउट्स है, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने थे सावियो सर से. तो मैं वो सारे क्वेश्चंस उनको पूछूंगा और मेरे भी कुछ सवाल है उनके पास, वो भी मुझे पूछना है. लेट्स कंटिन्यू, लेट्स बिगिन. वेलकम टू द शो सर, हाउ आर यू? I'm good. How are you? I am good. So we have our subscriber or our viewer. Her name is Nikita Alori. She has asked a question. What if witches follow us? How to get away with that? I think I answered this on the comment section itself, but I'd like to elaborate on that over here. कि witches से डरना नहीं होता है. Okay. Witches जो हैं उनका मेल काउंटरपार्ट है विजार्ड. राइट. सो विचेस आर नथिंग बट जस्ट अ फीमेल काउंटरपार्ट ऑफ विजार्ड. एंड विजार्ड को हमेशा मैजिक से एसोसिएट किया जाता है. सो वी लुक अपॉन विजार्ड. अगर बोलेगा कि कोई अच्छा खेल रहा है तो उसको क्रिकेटिंग विजार्ड बोलते हैं या विजार्ड का ब्रेन बोलते हैं. सो अ विजार्ड इज लुक्ड अपॉन. Okay. राइट. यू एडमायर विजार्ड्स बिकॉज ऑफ देयर मैजिक. बट वहीं पर अगर वो विच बना दिया तो लोग उसको काफ़ी धुतकारते हैं, विच इज़ रॉन्ग. राइट. अ विच इज़ ओनली अ फीमेल, अ फेमिनाइन काउंटर पार्ट ऑफ अ विजार्ड. तो लोगों को ऐसा लगता है कि विच जो है वो डायन है, चुड़ैल है, तो उनको मार दो. और अगर विजार्ड बोलेंगे तो वो जादूगर है और उसको बहुत अच्छे मानते हैं. वो पहले मिसकंसेप्शन को क्लियर करना ज़रूरी है. अ विच इज़ नॉट समवन दैट यू नीड टू गेट अफ्रेड ऑफ. You need to know that witches are as magical and mystical and as positive as a wizard can be. Of course, जैसा wizard भी जैसा है जादूगर होते हैं, सफ़ेद जादू भी कर सकते हैं, काला जादू भी कर सकते हैं, वैसे witches भी होते हैं. They can also be positive, at the same time they can be negative. What I guess the viewer Nikita is asking is, what if a negative witch is following you? आई प्रिज्यूम दैट बिकॉज अगर कोई पॉजिटिव विच अगर आपको फॉलो कर रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं, आप प्रोटेक्शन में रहोगे. बट इफ एट ऑल इट्स अ नेगेटिव पर्सन हु इज़ फॉलोइंग यू, यू टेक एग्जैक्टली द सेम प्रिकॉशंस दैट यू वुड टेक व्हेन अ गुंडा follows you, a bad person or an evil person follows you. You take the same precautions. You probably start walking faster, or probably you confront that person directly and say, why are you following me? Or you call up somebody in the vicinity so that you can get help, or do whatever you require. I mean, Okay, so my another question is, how would a person know whether the witch is a good witch or a bad witch? वो अच्छा है बुरा है वो तो हमें नहीं पता, हमें तो दिख ही नहीं रहा है वो. दूसरी बात यह है कि गुंडे को घूम के हम उससे बात कर सकते हैं, उसको पीट सकते हैं, लेकिन एक विच है जो दिख ही नहीं रही है, हमें पता ही नहीं है कि उसकी शक्तियाँ कितनी पावरफुल है, वो क्या कर सकती है. तो उसको हम डील कैसे करें? लाइक वी अस नॉर्मल ह्यूमंस, वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू हैव द करेज टू टर्न अराउंड एंड से कि ए तेरे को क्या चाहिए. नहीं, विचेस बहुत नज़र आती हैं. विचेस आर एज गुड एज विजार्ड्स. मैं बोल रहा हूँ ना, विजार्ड्स आर जादूगर, वो भी नज़र आते हैं करते हुए. सो विचेस आर सेम थिंग, वेरी पावरफुल वुमेन हु हैव द एबिलिटी टू कास्ट स्पेल्स एंड डू अ लॉट ऑफ वूडू और मैजिक. सो दे आर ऑल वेरी वेल, आई मीन, एनश्राइंड विद इन अ बॉडी. तो वो इनविजिबल नहीं होते हैं. ये मिसकंसेप्शन है. आप जो बात कर रहे हो वो, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट एन इनविजिबल एंटिटी. दैट विच इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. वो विच नहीं होता है. वो मेरे ख्याल से चुड़ैल वगैरह कुछ आप बोल रहे हो. दैट इज़ अ फीमेल डीमन, अ फेमिनाइन डीमन. सो वो अलग होता है. सो इफ योर क्वेश्चन इज दैट इफ अ डीमन इज फॉलोइंग यू, इफ अ फेमिनाइन डीमन इज फॉलोइंग यू, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. फर्स्ट, पहली बात तो कोई इमोशंस में नहीं बहना होता है. लोग काफ़ी कुछ बोलते हैं कि डरना नहीं होता है. इट्स नॉट अबाउट डर, इट्स अबाउट एनी इमोशंस.
It might be sadness or depression. It might be a questioning attitude. It might be a panic attack, anxiety. It might be fear or anger. You shouldn't be showing any of those negative emotions. So you just follow, just go back to whatever you're supposed to do or whatever like that. आपको कहाँ जहाँ पर भी जाना है आप चले जाओ. So I don't think any demon actually has the power or the capacity to harm you beyond your measure. Okay. If at all you are well protected, you ignore that completely. I don't think so anybody will just attack you just like that. Okay. So I understand that a lot of people, बहुत सारे लोग भगवान में यकीन करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते. तो जो यकीन करते हैं उनके लिए तो वो अपना भगवान का नाम ले सकते हैं. दे कैन टेक वॉट एवर रिलीजन दे आर फॉलोइंग, दे कैन टेक द नेम, दे कैन चैंट हनुमान चालीसा, दे कैन टेक एनी गॉड्स नेम एंड दे कैन save themselves maybe in that situation. But what if an atheist, एक नास्तिक इंसान जो भगवान पे यकीन ही नहीं करता, जो ये भूत पे यकीन ही नहीं करता, एंड देन ही फील्स इज वॉकिंग ऑन द रोड एंड उसको लग रहा है कोई उसका पीछा कर रहा है, एंड देन ही लुक्स बैकवर्ड एंड देयर इज़ नथिंग, एंड वो फिर से पीछे देखता है, लेकिन ही अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग एंड कुछ गलत है. अब वो सिचुएशन में वो ये नहीं करेगा कि मैं तो विश्वास ही नहीं करता, वो तो अपनी जान बचाएगा. yes. वो बोलेगा कि भाई अब से विश्वास करूंगा लेकिन इससे पीछा छुड़वा दे. हाँ. तो अब वो सिचुएशन में वो इंसान को तो पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, तो वो इंसान इससे कैसे डील करे. फॉर एग्जाम्पल विच इज़ फॉलोइंग दैट और बैड डीमन इज़ फॉलोइंग दैट पर्सन, तो वो खुद से कैसे उसको बचा लेगा, क्या करेगा, क्या वो सिचुएशन? कुछ नहीं, वापस से वही करेगा. ही विल जस्ट इग्नोर दैट पर्सन. फर्स्ट ऑफ ऑल वो नास्तिक है, ही डजंट बिलीव इन ऑल दीज एंटिटीज और व्हाटएवर. तो उसको सिर्फ एक आभास जैसे हो रहा है, एक फीलिंग आ रही है कि कोई डेंसिटी बढ़ गई है मेरे पीछे और कोई तो आ रहा है. इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी इवन राइडिंग द बाइक, यू सडनली फील दैट समबडी इज सिटिंग बिहाइंड. राइट, होता है. कार भी एक जगह पे रुकी हुई है, थोड़ा हिलना होता है. फॉर व्हाटएवर रीजन द वाइब्रेशंस हैपन, बट देन आफ्टर यू स्टार्ट फीलिंग दैट डेंसिटी एंड यू स्टार्ट फीलिंग अ फीलिंग ऑफ वॉचिंग, somebody is watching over you, and that feeling is real. There is somebody really watching you sometimes. But then what? You deal with it in the same way like I will deal with anybody who is watching me in my peripheral vision. मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कोई मुझे देख रहा है, right? ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पर मुड़ के मैं देख लूँगा कि यहाँ से कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है. If a real person is sitting over there. And if a real person is not sitting, if it's just an invisible entity, I do the same thing. I just first of all look around and check if at all whatever I'm feeling is right or wrong. पहले बात तो वो डाउट को क्लियर करना ज़रूरी है. इफ़ देर इज समथिंग और नॉट, इफ देर इज डार्कनेस ओवर देर, वहाँ पर टॉर्च मार के देखो कोई है कि नहीं है. पता चला आपको ऐसा लगा कि कोई तो इनविजिबल एंटिटी आपको फॉलो कर रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर सही में कोई चोर या डाकू बैठा हुआ आपको अटैक करने के लिए. तो आपको वो डाउट पहले क्लियर करना ज़रूरी है. एंड सेकेंडली, इफ देयर इज नोबडी ओवर देयर, देयर इज नो नीड टू गेट फ्राइटन्ड, यू जस्ट मूव अवे. So we have another user, her name is Betty Saha. She has asked a question whether where God comes in all this picture. If we are discussing a lot about demons and हम लोग बहुत सारे भूतों के बारे में बात कर रहे हैं, witches, चुड़ैल, ये सब हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो इसमें भगवान का क्या रोल है. और उसका ये भी उसने क्वेश्चन लिखा है कि भगवान ये सब जो भी चीज़ें हैं उनसे बढ़कर है, तो हम वो सारे चीज़ों को डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, या फिर वेयर डज गॉड, व्हाट इज अ गॉड्स रोल इन ऑल दिस थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग. आई थिंक डिस्कसिंग गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वॉट एवर यू कॉल इट एंड ऑल दिस थिंग इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे. जब हम वी आर टॉकिंग अबाउट पैरानॉर्मल इंस्टेंसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट डीमंस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इनविजिबल एंटिटीज लाइक द नेगेटिव और द पॉजिटिव वंस. I think God is a much more higher power than all these. So यहाँ पर हम वो रिसर्च कर रहे हैं, when we are into our paranormal research, we are not researching God over here. God is a most higher power. अगर आप उसको universe बोलो या God बोलो या whatever you want to call that entity, is in a higher dimension and is powering the entire universe. सब जो धातु बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं, उनको सबको प्रॉपरली मेल उसका करना, एंड विद द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द यूनिवर्स टू गिव पावर टू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, दैट इज़ द पावर ऑफ गॉड. एंड आई कैन नॉट बी लिटिल गॉड by talking God in the same breath that I talk about demons.
God is a higher power. God uses demons to control things. God uses the angels to control things. And God uses humans and all the creatures on earth to control things. So there is nothing such as coincidence. So that is what my take on this question is, that I don't want to talk about God when it comes to demons. Demons बहुत तुच्छ चीज़ होती है. It can be controlled even by humans. Why to invoke the name of God and all these things? And I remember this question that she had written, that a lot of paranormal investigators abroad invoke a lot of name of God and all these things. It is up to them. I have never actually seen any paranormal investigator from the US really calling upon the name of God in their exorcisms or in their investigations. Because when you talk about paranormal investigations, it goes very logical with all the gadgets and the gadgetry that we go with on a different location, probably using our psychic senses. So we don't need to invoke God's presence there. And when it comes to, paranormal investigations, I've answered that also, that why only paranormal investigations? You talk about any profession on earth, you require the blessing of God and everything. Yes. So belittling God to investigate invisible entities or demons, I think so is a very bad thing to do. There was another question which I had personally, which I have read all the comments through all of the videos that have come on our channel, and there was this question is a mix of a lot of questions. So the question is, ये gadgets के बारे में जब हम बात करते हैं तो I think ये gadgets तो अभी आए हैं, maybe 60, 50, 100 years back, or maybe something like that, right? I'm not sure, but maybe in that 80, 100 years where technology has boosted out a lot. What about these things 200 and 300 years back or 400 years back? So I know that these things are not recorded in the history, or these things we cannot talk about, or we cannot judge what was happening back then, because there was no internet, no YouTube where you could see videos कि पहले लोग करते क्या थे. लेकिन we can at least have an understanding कि हो क्या रहा था वो टाइम पे. This question is a discussion कि कैसे होता था पहले ये चीज़ें, क्योंकि हम काफ़ी सारे मूवीज़ देखते हैं. सो माई इंस्पिरेशन इज़ मूवीज़ एंड सम रियल टाइम वीडियोज़ दैट आई सी ऑनलाइन. सो वीडियोज़ में पहले जब दिखाते थे तब और मूवीज़ में, तो पहले ये इन्वेस्टिगेशंस और ये चीज़ें कैसे चलती थी, हाउ पीपल यूज टू कैरी आउट ऑल दिस थिंग्स एंड हाउ पीपल यूज टू पुल ऑफ दिस थिंग्स. See, the gadgets that we use right now, they are mostly all industrial gadgetry. Okay. There are EMF sensors and radio pollution detectors, motion detectors. Mostly all these gadgets only measure the differences that happen or the fluctuations that happens in the environment. Okay. Right? Temperature changes, air pressure, humidity, vibrations. These are all changes that take place in an environment. Okay. Because we were able to put that into technology, so we have the gadgetry right now. But even without the gadgets, we can definitely know whether a temperature has risen or fallen. Right. Right. There are some places wherein you will feel the density, and probably even by olfactory manifestation. Olfactory matlab by the smell. Smell, yes. You get to know whether something is dead and rotten someplace, or is there any LPG, what is that called, pollution or leakage anywhere. Okay. So you tend to get these things. Right. So even in the olden days, before the gadgets were actually invented and brought into technology, people used to measure or investigate using the raw responses that we get from the environment. Okay. Like कहीं ना कहीं तो एक balloon रखेंगे जहाँ पर हवा नहीं हो रही है, and then afterwards ask a question and see if any whiff of wind comes and alters the state of the balloon, and afterwards measure it, see exactly कितना हिला और क्या कब हिल रहा है. When I'm giving the question, वो तभी response दे रहा है कि नहीं दे रहा है. कहीं भी हवा नहीं है. They can light a candle somewhere and measure the flame, how it goes in which direction, and you ask questions like, if at all, if at all you're here, or if at all you're a male or a female entity, then you move the flame in particular direction and measure the changes that happens. Okay. So everything it's all about measuring the changes in the environment, because all these invisible entities जो होते हैं वो ultimately वो environment को ही use करके manifest करेंगे. Okay. Right. So the changes in the environment will be exactly what it is. You keep a potted plant also in front over there, and then afterwards you measure if at all there is any insect coming on top of it,
or whatever like that. So you ask the entity to manifest itself in environmental terms. Very recently, this last week, we had been to a fort on the outskirts of Mumbai, Okay. and we had our investigation there. Okay. And over there, it was like that entity wouldn't come on the gadgets too much. Okay. It was giving us a lot of manifestation through the environment, in spite of us having like so 10 different gadgets. बट वो गैजेट्स के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत आ रहा था, द टेम्परेचर ऊपर नीचे सब हो रहा था, ईएमएफ में भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा था. बट हम जैसे इसको बोले कि यू मेक अ नॉइज एंड यू शो अस, तो कहीं ना कहीं से तो एक आवाज़ आएगी. And it is only when we ask for a response that the noise will come. It was not coincidental. Okay. So these entities do manifest themselves using a lot of the surrounding atmosphere and the environment. So पुराने times में जब gadgetry नहीं हुआ करती थी, I think there were a lot of people who were using the environmental factors to investigate like that. So we have another viewer, we have another subscriber. Her name is Gargi. So Gargi has a question. The question is, I always sense something around me. Since childhood, I used to hear payal ki awaaz, and then I have also experienced touches on my body and hearing footsteps. Recently, while I was sleeping, someone grabbed my hand and I wasn't able to do anything. These things happens 2 to 3 times each year. There are 2-3 things we'll have to mention around in this thing. First is her perception of things. Okay. Since birth, she's been able to hear some pile or some noise or something like that. So that makes a case for clairaudience. Okay. Clairaudience is the ability of a human to hear spectrums of sound or frequencies of sound beyond the normal human spectrum. So it may be infrasonic, it may be supersonic or ultrasonic, right? So only a few people are blessed with that. Okay. Clairaudience. Then also to see things like in the peripheral vision, you see some shadows or you see some light or somebody just moving around. That is called clairvoyance. Okay. So clairvoyance is where you see spectrums of light or frequencies of light beyond the normal frequencies or the spectrums that normal people would be able to see. Okay. So that is clairvoyance. So probably Gargi is a clairvoyant or a claircognizant or a clairaudient who is able to sense these sounds. Okay. It might be possible. And the other part of her question is sometimes that she feels in a dream or when she is in a sleep, she's not able to move or something like that. Is that so? She says that recently while I was sleeping, someone grabbed my hand and I wasn't able to do anything. And these things happen to her 2 to 3 times a year. Yeah. So this is part of, we can say, sleep paralysis. If you know about sleep paralysis, it's exactly our bodily response. It's nothing paranormal. It is only our body and our brains respond to just kick you out of that state. Wherein you're sleeping in a certain position and there is a lack of blood circulation in certain organs. There's a lot of pressure. So your brain just tricks you or shows you some visuals, whichever may trigger you. Sometimes it might be good, sometimes it might be bad, evil or whatever like that. And it will try to panic you out of this complete sleep. Okay. So this is probably what has happened with her. And this also gets me to one more other person who had personally messaged me after watching the video that he was diagnosed with schizophrenia. Okay. And he was about to give up his own life. He was depressed and having a lot of panic attacks. I mean, I wouldn't like to discuss the entire case on exactly what happened, but then when he approached me, when I read his photograph, when I had a chat with him, I found that he is not really schizophrenic. Oh. Yeah, and he was taking medications for no reason, just like that. And whatever visuals and whatever he used to sense and see were actually real visuals. Oh. And that's where I felt a connect with him because ये मेरे साथ तो बहुत होता है. मेरे घर पे मुझे मेरी बीवी को भी नज़र आता है अभी. So I've taught them exactly how to see things beyond the spectrums and people are able to sense it. Okay. So I found that this person was not really schizophrenic और उसको फालतू में लोग उसको पागल करार कर रहे हैं. It is not like that and simply on medication. So that cooled his nerves a lot. So there are a lot of people out there who think that they are possessed or they are schizophrenic or they're having some sort of deformity or something like that. But they aren't really. They're just blessed with clairvoyance. They can see things which normal people can't. It's only about how you control that urge and not panic when these things happen.
So over here, I would say, I mean, I would suggest Gargi also do the same thing. Don't get too panicky or don't get too anxious about whatever you see. Don't try to solve it or don't try to cure it. You're blessed, so I think so. You should be living that with the blessing. सो आई होप हमने अभी काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आंसर किए हैं एंड अगर फिर भी इसके बाद अगर आपको और भी कुछ सवाल है जो आपको पूछने हैं सो प्लीज़ put your questions in the comments below and we'll try to answer those questions in the next video. और इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं या फिर if you have something that you want to say, you can DM Mr. Savio sir and he will try to answer you those questions after all the questions he already has pending which he is yet to answer. And अगर वैसा होगा तो you can also DM us. Our ID is at the rate the haunted show on Instagram and we'll try to get those questions on our channel next time. So till then, like, share and subscribe and thank you Mr. Savio for being on the channel. Welcome. So keep watching the haunted show.